मैं जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के घर से बहुत दूर। अब कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के घर। ऐसा मत बोलो बाबू, घर चलो, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है तो तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो, और ना ही मम्मी मेरी मम्मी है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अरे रुको चिंटू बाबू को, वो भाग रहा है। अरे रुक जा बाबू, मैंने डीजे लगाया है घर पर, और चिंकी एक बड़ा आइसक्रीम वाला केक लेकर आई है तुम्हारे बर्थडे के लिए। हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देना चाहते थे। अरे रुक जाओ, चलो अपना बर्थडे मना लो केक काट कर। चुप करो और मुझे जाने दो, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा आज बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं है। अरे रो मत बाबू, रुक जाओ और घर चल, हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, चल मेरे साथ। हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम दुश्मन हो मेरी। बड़ा भाग रहा था तू, अब ले चलो मम्मी इसे घर। मुझे वो पूरा केक खाना है, मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है। अरे बाबू, मैं चिंटू और चिंकी ने मिलकर घर में एक बड़ा केक रखा है, और डीजे भी लगाया है तुम्हारे लिए। सच में? तो दौड़ के चलो। हाँ, मैंने ढेर सारा रसगुल्ला भी बनाया है तुम्हारे लिए। मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा बड़ा सा केक काट कर। दौड़ो चिंटू और चिंकी। वाह वाह वाह, ये हरा वाला आइसक्रीम तो उस लाल वाले आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। अरे तोड़ी के, वो तो वही लड़का है जो मुझसे मेरा लाल वाला आइसक्रीम छीनने आया था। और तेज दौड़ो मम्मी, चिंटू और चिंकी, मेरे आइसक्रीम वाले केक को कोई घर से चुरा ले जाएगा तो मैं अपना बर्थडे भी नहीं मना पाऊंगा आज। और तेज दौड़ो तुम सब। अच्छा, तो उस लड़के का बर्थडे है आज, और वो आइसक्रीम वाला केक काट कर खाने जा रहा है उसे। मैं भी चलता हूँ आइसक्रीम वाले केक को खाने, पूरा केक ही लेकर भाग जाऊंगा मैं। चल अब नीचे उतर बाबू, हम घर आ गए। चलो अब सब घर के अंदर, मेरा बर्थडे मनाते हैं केक काट कर। बाबू तू ही घर का दरवाजा खोल, तेरा बर्थडे है ना। हाँ तू ठीक कह रहा है चिंटू, मैं खोलता हूँ दरवाजे को। अरे बाप रे, मम्मी तूने इतना सारा चीज घर में लगाया है, वो भी मेरे लिए। डीजे है, रसगुल्ला है, और गुब्बारा भी है, और एक बड़ा सा केक भी है। ये सब तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे बाबू। अब चलो अपना बर्थडे मनाओ केक को काट कर। अरे बाबू, अब तू क्यों रोने लगा, वो भी अपने बर्थडे पर। मैं तुम सबको बहुत गाली दिया हूँ भर भर के। क्या? मैंने सोचा कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन तुम सब तो देवता निकले रे दादा। अरे बाप रे, इतना बड़ा केक, आज तो मजा आ जाएगा। मैं वो पूरा केक लेकर भाग जाऊंगा, और वो कमीना लड़का फिर अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। अरे रोना धोना बंद कर बाबू, चल जल्दी से केक को काट कर अपना बर्थडे मना। मुझे वो पूरा केक खाना है। हाँ काटता हूँ। पहले केक काटने वाला तो लेकर आओ। रुको मैं लेकर आती हूँ। ये ले बाबू, अब काट इससे केक को। अब मैं जैसे ही केक काटूंगा तुम सब गुब्बारे को फोड़ना, ठीक है? हाँ चल काट, मुझे तो बस केक खाना है। बस यही मौका है, केक को लेकर भाग जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे वाला गीत तो गाओ चिंटू, चिंकी और मम्मी, तभी मैं काटूंगा केक को। जल्दी से काट केक को, नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। ठीक है काटता हूँ। अब गोबर काट के मना अपना बर्थडे। अरे मम्मी रे, वो कमीनी बिल्ली मेरा केक लेकर भाग रही है, जल्दी पकड़ो उसे। अब मैं कैसे खाऊंगा केक, वो कमीनी बिल्ली लेकर भाग गई। बाबू चला गया उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। अब तुम दोनों भी जाओ और उस बिल्ली से केक छीन कर लाओ। जल्दी चल चिंटू।
The period from 1980 to 2000 represents one of the most significant transformations in the history of the United States economy. At the start of the 1980s, the nation was still recovering from the economic problems of the 1970s, including high inflation, slow growth, and declining industrial productivity. Over the next 20 years, the U.S. economy shifted away from traditional manufacturing toward services, finance, and technology-driven industries. Government policies during this time focused on reducing taxes, limiting regulation, and encouraging private investment. At the same time, globalization increased as American businesses expanded internationally and international trade grew rapidly. These economic changes reshaped the labor market, increased productivity, and strengthened the U.S. position in the global economy. By the end of the 1990s, the United States had emerged as a leading economic power with a strong, innovation-based economy. In 1980, many Americans were uncertain about the future of their economy. Rising prices, high interest rates, and widespread unemployment made everyday life difficult for families and businesses. Gas lines and inflation had weakened confidence in the nation's economic stability. However, just 20 years later, the United States experienced one of the longest economic expansions in its history. Unemployment fell to record lows, inflation remained under control, and new technology companies reshaped how people worked and communicated. This dramatic change invites an important question. How did the U.S. economy recover so strongly in such a short time? Exploring this period reveals how policy decisions, innovation, and global connections worked together to transform the American economy between 1980 and 2000. The early 1980s were marked by economic difficulty, including high inflation and unemployment. President Ronald Reagan introduced supply-side economic policies, commonly known as Reaganomics, which aimed to stimulate growth through tax cuts, reduced government spending on social programs, and deregulation. Although these policies initially led to a recession in 1981-1982, they were followed by economic recovery and expansion later in the decade. During the late 1980s and 1990s, globalization increased as trade expanded and U.S. companies invested overseas. The early 1990s saw another mild recession, but the economy rebounded strongly due to technological innovation. The rise of computers, the internet, and software industries created millions of jobs. Under President Bill Clinton, budget discipline and trade agreements, such as NAFTA, helped promote growth. By the late 1990s, unemployment and inflation were low, and the federal government achieved budget surpluses. From 1980 to 2000, the United States economy underwent a powerful transformation that shaped the modern world. The nation moved from economic instability to a period of strong growth, fueled by innovation, trade, and policy changes. While these decades brought prosperity and technological advancement, they also introduced challenges such as income inequality and economic dependence on rapidly growing industries. The dot-com boom of the late 1990s highlighted both the opportunities and risks of a technology-driven economy. Overall, the economic developments of this period laid the foundation for the digital and global economy that exists today. Understanding this era helps explain current economic conditions and reminds us that long-term economic success depends on careful planning, innovation, and adaptability. In 1980, the United States economy was struggling. Americans were dealing with high inflation, high unemployment, rising gas prices, and slow economic growth. Many people feared that the country's economic power was declining. Fast forward to the year 2000, and the situation looked completely different. The United States had one of the strongest economies in the world. Unemployment was low, inflation was under control, and new technology companies were transforming daily life. This dramatic change raises an important question. How did the U.S. economy improve so much in just 20 years? The period from 1980 to 2000 was filled with major policy changes, technological innovation, and increased global trade. By examining this era, we can better understand how economic decisions and innovation shaped modern America. This transformation did not happen overnight, and it involved both successes and challenges that continue to influence the economy today. The period between 1980 and 2000 was one of the most important times in the history of the United States economy. During these 2 decades, the country experienced major changes in economic policy, business practices, and technology. The U.S. moved away from a mainly industrial economy toward one based on services, finance, and technology.
Government policies played a large role in this shift, especially changes in taxation, regulation, and trade. At the same time, globalization connected the US economy more closely to the rest of the world. New industries emerged, while older manufacturing jobs declined. These changes affected how Americans worked, earned money, and lived their daily lives. Understanding this period helps explain how the United States became a global economic leader by the end of the 20th century. This note will explore the major economic developments, challenges, and achievements during this transformative era.